Chapter 1, Chemistry, Solutions, Expressing Concentration of Solution. This is the topic which I am going to discuss here. So basically I am going to discuss the concentration of solution, that there are many ways by which we can describe the concentration. Basically in our syllabus we have binary solutions. Binary solution means which have two components or two system, a system which have two components or two component system. One is solute and other is the solvent, and we all know that our solute is basically in less quantity and solvent is in the large quantity. Fine. So how can we express the solution? In different ways. So first is the mass percentage. In the terms of mass percentage we can explain our solution. Like what do you mean by mass percentage? Basically it is 100 by parts. It is the basically mass percentage of a system of a solution is defined as the mass of the component in the solution divided by total mass of solution. Means if you divide the mass of one of the component, this one component can be solute and other component can be solvent. So any one component, suppose this is A and B, you can take mass of any of this component and you just divide the total mass of the solution. The total mass of solution constitute with solute plus solvent. So total mass solution means A plus B. So A plus B total mass and the mass of A or B multiply by 100 will give you the mass percentage of that solution. For example, if a solution is described by 10% glucose in water by mass, it means, see, 10% glucose means, because it is percentage, the total is 100. So because we are studying the W by W, weight by weight, mass by mass, it means in a solution 10 gram glucose in 90 gram of water. So this is total 100 gram. Fine. So if you divide 10 gram by 90 and you multiply it by the 10 upon 90 plus 10, because total mass of the solution is solute plus solvent. So 10 gram is the solute, 90 gram is the solvent. So total mass will be 10 plus 90. 10 by 100 multiplied by 100 will be 10% only. So 10% is the mass percentage of glucose. Fine, which is weight by weight. Now next is the volume percentage. Now volume percentage kya hai? It is the basically if you divide volume of one component to the total volume of the solution, multiply by 100, you will get the volume percentage. So here parts per 100 is there. Fine. जैसे हमने W by W पढ़ा weight by weight, ऐसे ही volume by volume. Here the units will be in ml, but the percentage is unitless because V by V or W by W, the units will be cancelled out. So now it is like, for example, 10% ethanol solution in water means 10 ml of ethanol dissolved in water such that total volume of the solution is 100 ml. So 10% ethanol means your 10 ml ethanol and it has 90 ml of water, because if you see the total volume of the solution is what? It is 100 ml. So your total volume of the solution should be 100 ml and your solute and solvent, it should be less than 100. So 10% ethanol means 10 ml ethanol and 90 ml water. Now next is the mass by volume. It is not a percentage basically, but is a percentage ki form mein bhi we can study. Mass by volume is what you have to do. You have to divide the mass of solute by volume of solution. This is W by V. Mass of solute divided by volume of solution. So this is known as the strength. So this is the another concentration जिसे हम strength बोलते हैं. तो strength is basically what? Mass of solute. It is fixed that mass should be of solute divided by volume of the solution. Fine. The volume of the solution. If you multiply it by 100, it will be W by V percentage. So it is again mentioned that another unit which is commonly used in medicine and the pharmacy is mass by volume percentage. It is the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution. Now next is the parts per million. Now what do you mean by parts per million? जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे कि parts per 100.
नाउ वी विल स्टडी पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स हम पर 100 की बजाय हम पर मिलियन फैक्टर लेंगे विच इज़ 10 raised to the power 6। ऊपर जहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ हम उसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग पार्ट्स पर मिलियन। So we use this quantity when our component is present in a trace amount or at very less amount. So when a solute is present in trace quantities, it is convenient to express concentration in ppm and is defined as parts per million. And parts per million is basically what its formula is the number of parts of the component. जितना भी एक component का आपको number of part given है, if you divide that part of a particular component to the total number of parts of all the component of the solution, मतलब आपने एक component का part लेना है, उसको जितने भी components हैं उन सब के total parts से divide करना है, multiply करना है per million से, this will give you the parts per million. It is just like parts per 100 or the percentage. मीन्स जो भी आएगा 10 की पावर 6 से स्मॉल रहेगा बिकॉज हमें टोटल इतना गिवन है। जैसे हमें परसेंटेज में टोटल 100 गिवन होता है, 100 के रिस्पेक्ट में विजय कि इससे कम ही जाएगा या 100 जाएगा, फाइन। तो ऐसे ही 10 की पावर 6 पर मिलियन है आपका, मिलियन के रिस्पेक्ट में वी आर स्टडिंग द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, फाइन। So as in the case of percentage, the concentration is parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume. It is like जैसे परसेंटेज में हमने concentration को मास टू मास, W/W, V/V, W/V पढ़ा है, ऐसे हम पार्ट्स पर मिलियन को भी करते हैं। इट इज़ लाइक लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर में विच वेज 1030 ग्राम, इट हैज़ 6 multiplied 10 raised to the power -3 ग्राम ऑफ dissolved oxygen. Such a small concentration is also expressed as 5.8. This is basically mu gram. Fine, this is mu gram per 106 gram, which is 5.8 ppm of seawater. The concentration of pollutants in water atmosphere is often expressed in terms of mu gram per ml or ppm. तो हम इसे mu gram per ml और ppm में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये क्वांटिटी वहाँ लगाते हैं जहाँ पे कोई भी सॉल्यूट आपका बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, राइट। So this is the ppm. Now next is the mole fraction. Now what do you mean by mole fraction? नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो हमेशा एक से छोटा होगा, पॉइंट में रहेगा। सो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? सपोज वी हैव 2 कंपोनेंट सिस्टम विच इज़ बाइनरी सिस्टम, सो वी हैव सॉल्यूट, ऑल्सो वी हैव सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो कैसे निकालेंगे? तो हम उस केस में किसी की जिसका भी आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स लेंगे। सपोज हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम सॉल्यूट के मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन कौन से होगा एक पूरे सिस्टम के अंदर, बिकॉज वी हैव 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो 2 ही कंपोनेंट हो गए सिस्टम में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट। तो आप किसी एक कंपोनेंट के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, फाइन। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी हेयर this is basically XA Na divided by Na plus Nb. For a solution containing I number of components we have this formula कि अगर सपोज़ किसी सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जिसको हमें नहीं पता कि कितने नंबर हो सकते हैं, सपोज़ I नंबर है वो, तो उसको हम ऐसे करते हैं। सपोज़ हमें ith नंबर का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप Ni के मोल्स लेंगे और उसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे, जब मीन्स उसमें आपका Ni भी इंक्लूडेड होगा, फाइन। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला। अब डिपेंड करता है कि जितने भी कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मोल फ्रैक्शंस आपके जितने भी आपके सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर आप सबके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो हमेशा किसके इक्वल जाएगी वैल्यू? 1 के इक्वल। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। एंड मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन से Weber pressure with the concentration of the solution and quite useful in describing the calculation involving gas mixture. So it is a quite useful quantity. आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ मोल फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या है। किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स को अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें, दैट विल ऑब्टेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। एंड टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1. इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड इट इज़ नॉट स्मॉलर देन 1. Now next is very important, it is the molarity, जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। मोलारिटी क्या है?
ये एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन है, ये बताएगी कि हमारा कितना सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. सो मोलारिटी इज़ बेसिकली व्हाट इट टेल्स यू दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, मोलारिटी. सो मोलारिटी आपको सॉल्यूट के टर्म में आंसर देगी कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके मोल्स को रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्यूट के मोल्स को. अगर किसी की मोलारिटी 2 मोलर है तो 2 मोलर क्या है, दिस 2 इज़ बेसिकली द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ वाटर और 1 लीटर ऑफ वाटर. राइट. So for example 0.25 mole per liter or 0.25 molar solution of NaOH means 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter of the solution. So this is the example you can see here, that calculate the molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. तो आपको weight given है 5 ग्राम, आप इसको मोलर मास 40 से डिवाइड करें, you will get the moles of NaOH. Volume is given to you which is 450 ml. If you divide this 450 by 1000 you will get this volume in milliliter in liter basically. So molarity का formula लगाएं, N upon V, moles upon volume of solution. This N of solute and volume किसका है, आपका solution का. Just put these values, you will get the molarity of the NaOH solution. Now next is the molality, which is again a very important concentration. Molarity is what? It is defined as the number of moles of solute per kg of the solvent dissolved. Fine. अब देखो ये भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताती है, वो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताती है, बट जो मोलारिटी है वो कितने लीटर, मीन्स वो ये बताएगी कि 1 लीटर पानी में कितना मोल्स है सॉल्यूट का, और मोलारिटी बताएगी 1 किलोग्राम पानी में कितना मोल्स है सॉल्यूट का. मीन्स एक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताएगी और एक आपको वेट के रिस्पेक्ट में, एक आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताएगी, एक आपको सॉल्वेंट के वेट के रिस्पेक्ट में बताएगी नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं. सो फॉर एग्जाम्पल now the formula of molarity is the moles of solute divided by moles of solvent in kilograms. So for example 1 mole per kg or 1 molar solution means what? It means 1 mole of KCl and dissolved in 1 kg of water. And each method of expressing concentration of the solution has its own merits and demerits. So mass percent, ppm, mole fraction, molality, they are independent of temperature, whereas molarity is function of temperature. This is because volume depends on temperature and the mass does not. Very important और क्रक्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कि अगर आप देखें हर एक अपने कॉन्सेंट्रेशन के मेरिट है डीमेरिट्स हैं. तो इफ़ यू सी लुक एट द मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, जितने भी ये मैंने अभी नाम लिए कॉन्सेंट्रेशन के, ये सारे वेट बाय वेट के हैं. यहाँ पे हर जगह वेट है जो आपका डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, मास बेसिकली. तो मास जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इसी वजह से ये जो कॉन्सेंट्रेशन हैं ये टेम्परेचर से वैरी नहीं करेंगी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मोलारिटी, इट हैज़ द वॉल्यूम factor in the denominator and volume is temperature dependent. So molarity changes with respect to temperature. That is why molarity is the temperature dependent, but mass does not. Fine. This is very important thing. So this is it. Basically the expressing concentration of the solution in the NCERT. In the next video I will discuss the further chapter.